Hare Krishna, good morning and welcome all of you all for the Sunday morning Bhagavad Gita class. So, we are already in the second chapter, in the last phase of it, but we had a 1 month break literally because we had many functions like Radhashtami, Janmashtami, and of course in between we had gone for a yatra. So, taking into account of all this, we had a 1 month long break. So, I'm sure you all must have forgotten what we studied 1 month before. आजकल तो कल क्या पढ़ा आज याद नहीं रहता है, तो एक महीना पहले का तो सवाल ही नहीं उठता है. एंड आई एम ऑल्सो वेरी मच श्योर नो वन ऑफ यू ऑल मस्ट हैव ओपन द नोट्स एंड स्टडीड व्हाट वाज टॉट इन द लास्ट अटेंडेड लेक्चर. सो आई एम वांट माता जी, यू हैव स्टडीड एंड कम? हाँ, वेरी गुड. चलो, एक स्टूडेंट पढ़ के आया. और कौन पढ़ा है? विच अदर स्टूडेंट हैज रेड एंड कम? रिकैप के लिए स्पेशल पॉइंट्स मिलते हैं. जो रिकैप का पॉइंट्स बोलेगा उसको स्पेशल 1 प्लेट एक्स्ट्रा मिलता है उसको प्रसाद. हाँ, बोलिए माता जी, क्या याद है आपको लास्ट सेशन में क्या क्या डिस्कस किए थे हमने? हाँ 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 हाँ. तो आत्म साक्षात्कार के ऊपर था. जो वेदों में अलंकारमयी भाषा होती है, वेद जो हमें कर्मकांड करने के लिए कहते हैं, हम उसका अपना पूरा जीवन निकाल देते हैं. और वो सब फ्लावरी मतलब टेम्परेरी है. हाँ. और वो कर्मकांड से हमको लिबरेशन नहीं मिलता. और दो चीज़ों में डिफरेंस होता है. मोक्ष अलग होता है और लिबरेशन अलग होता है. ये तो उसमें से समझा प्रभु जी. और दूसरा जो हमने किया था कि अर्जुन ने 5 क्वेश्चन पूछे थे कि जो रियल डिवोटी होता है, स्थित प्रज्ञ का क्या लक्षण होते हैं, का भाषा का आचरण कैसा होता है, क्या 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 खाता है, क्या चलता है, सब कुछ कैसे बोलता है, ये सब पूछना. अभी क्वेश्चन का जवाब इस क्लास में हमको सुनना है. वेरी गुड. एनीबडी एल्स वांट्स टू ऐड एनी मोर पॉइंट्स? Prabhuji, you had asked about what is the difference between self-realization and liberation. What is the difference? So, one who is already, he has the difference, he has known the difference between body and soul, and who is also applying it in life is already liberated. And there was another thing that you discussed was information. There are 3 forms of Lord: Brahman, Atman, Paramatma, and Bhagavan. And all are liberated forms. And then you discussed about how Parikshit was saved from the... You are, I think, confusing this point with one point. I had mentioned this 5 types in which Lord can be realized. What are the 5 ways in which God can be realized? God is in the form of Purusha Avatar. That is, he is in Vaikuntha. Then he is in the Shir Sagar. Then he is in the each and every body's person's Paramatma. Then he is as Anu, विश्व के हर अणु में व्याप्त हैं. And last but not the least in the Archa Vigraha form. So these are 5 things which are very important. This is you have amalgamated with what I had taken in her house. That is little amalgamation. That was not taken. That class, that was not taken. So any of you have completed 53 and 54. So, 53 we have completed. 54 start करना है. Arjuna answers. 54 Arjuna answers. So 53 is. Sorry, Prabhuji, 54 किया है. 55 लेना बाकी है. Oh. Okay, just let's do from 53 so that we have a little, just we'll go through the reading of it so that then we can get the proper flow of it. 2.54 से हम लोग 52 से हम लोग लीड करेंगे. नहीं, 2 भी हो गया. When mind is not destroyed, the flowery way. Yes, read this 2.53, then I will relate it with yesterday's lecture also. Please read 2.53. When your mind is no longer disturbed by the flowery language of Veda, Yeah. and when it remains fixed in the trance of self-realization, then you will have attained the divine consciousness. So the most important word is you are no longer disturbed by the flowery words of the Vedas. So yesterday also in the Bhagavatam class I was discussing the same thing. If Vyasdev is sad, and what did Narad Muni, his spiritual master, say, advise him? First and foremost, he was morose, and whenever a person is not happy,
not materially, but spiritually. When he is not in happy, he is supposed to approach his spiritual master, and the spiritual master then guides him what is lacking in his spiritual life, which can make him happy. Material things cannot make you happy. That is for sure. There is no iota of doubt about it. If someone says, I am happy materially, he is highly ignorant. He is fool. It's like a small child trying to put his finger in fire. The child doesn't know, aag kaise jalayegi haath ko. But innocently the child will put his finger in the fire or in the boiling water or in the, पहले ज़माने में छोटे टेबल फैन आते थे और उसके अंदर उंगली डालते थे. तो उसमें एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था. Once Srila Prabhupada's son, I think Prayag, he was trying to put his finger. So Prabhupada caught his finger and took him near the fan and made him just get the feel of it. Just get the feel of it. His wife said, why you have done this? He said, if he doesn't get the feel of it, next time he will never venture only. Once he gets the feel of it, he knows next time mera haath injure hoga ya katega. So he will know the feel of it. So that's how a good spiritual master is one who gets the feel of it. He might scold, he might chastise the student, but it is for the betterment for his own life, not meant for his betterment, but for the betterment for his own life. So it's always better, if one doesn't get any chastisement from his spiritual master, means he is a very, very abhaga soul. This is what Shastra says. If you are chastised by your spiritual master, means spiritual master is having a special attention on you. अगर आपने चोरी की और आपका चोरी पकड़ा नहीं गया, that means what? Spiritual master has not noticed it. You are in the loss. He is not in the loss. You are in the loss. But if you do something wrong and the spiritual master catches you and scolds you, you should think, oh, it's for my benefit. I am so lucky that he has put a special merciful eye on me. That's how one has to interpret it. So it's the bottom line is the flowery language of the Vedas is it's a trap. It's a big trap. Those who are in the spiritual, so to say, so-called spirituality, these people slowly get deviated. Yesterday I had a very nice video of Lal Bagh Raja, and some music song was going on, and Ram ji ki nikli savari. Kahan Ganesh ji, kahan Ram ji, and people are dancing to that gulal and that food fog machines, and that everyone must have watched, I'm for sure, that flowers being thrown from the flyover and all that. Is your focus on God or on the demigod or on all these flowery things? The whole purpose of what the Vedas are trying to tell, okay, you please pray to Ganesh ji, but then, flowery, you offer good to him, you do something. So finally it becomes dekha dekhi, yaar, I want to be better, my group has to be better than your group, or my troop has to be better than your troop, and finally the Lord is kept aside and unwanted things are done. Okay, so this was done. Now please read 54. Somebody read 54. Dr. Sahab, padhiye 54. Arjuna said, O Krishna, one whose consciousness is the merged in transcendence. How does he speak and what is his language? How does he sit and how does he walk? Does these words actually literally mean the same what he's trying to say? How you walk, how you sit, how you speak, what is your language? Is that the actual thing which Arjuna is trying to ask? It is said, from the way in which a person behaves, you get to learn from him. You get to learn something about him. Acharan, why he is called an acharya? उसका आचरण कैसा है, इसके लिए वो आचार्य बनता है, ना कि वो ज़्यादा पढ़ लिया या एकदम लंबे लंबे बाल रख लिए, बड़ा बड़ा कलरफुल. आजकल तो क्या है, फैशन डिज़ाइंड तिलक सब आ रहे हैं आजकल मार्केट में. आप देखोगे ना, कई सारे नए लोग फनी तिलक के साथ आ रहे हैं मार्केट. सो दे लुक अट्रैक्टिव. क्या पावरफुल लगता है एकदम. मेकअप सॉलिड है इसका. इट शुड बी, द कोर शुड बी
good. The core has to be perfect. If that core is not correct, then what you are selecting, what all you are selecting from the externals is a big waste. Now, these are the acharan. So let's understand the acharan, then I'll explain something more different. The Supreme, Shri Bhagavan Uvacha Prajatihi Yat Kaman Sarvan Partha Manogatan Atmane Eva Atma Tushtaha Sita Pragya Tat Uchyate. Very, very powerful words which describes the quality of a person who is situated in ट्रांसेंडेंस. आप कैसे बोल सकते हो ये व्यक्ति ट्रांसेंडेंस में है या स्पिरिचुअली वेल सिचुएटेड? स्थित प्रज्ञ, द वर्ड यूज्ड इज स्थित प्रज्ञ. प्रजाति यत् कामान सर्वान् पार्थ मनोरथाः आत्मनि एव आत्मतुष्टः. दीज आर द एट्रीब्यूट्स और द क्वालिटीज. ये क्वालिटीज होना चाहिए. देन यू कैन कंसिडर योर सेल्फ एज. आधे लोग तो अभी भी क्रो एंड स्वान के बीच में अटके हैं. शास्त्र कहता है माता जी, मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र कह रहा है. फिर कुछ लोग तो सुबह से ऐसे ऐसे चल के आ रहे थे. Okay. What's the translation? The Supreme Personality of Godhead said, O Partha, when a man gives up all varieties, please repeat, all varieties of sense gratification which arise from mental concoction, and when his mind thus purified finds satisfaction in the self alone, then he is said to be in pure transcendence, transcendental consciousness. So this is a tricky verse. 2.55 Bhagavad Gita is a very, very tricky verse. Why it's tricky? Because it's a demanding verse. आपसे बहुत कुछ मांगता है. और क्या मांग रहा है? Let's go to the word to word translation. You know, as I like the Sanskrit part. इसमें तो जोर से थप्पड़ मारता है और मालूम भी नहीं पड़ता कि थप्पड़ मारा है. कितना अच्छा अच्छा वर्ड्स यूज करते हैं उसमें. प्रजाति means give up. Yad kaman, desires of sense gratification. The underlining word is sarvan, all. So can anyone explain to me what is this all? Yes, Chandrakant will explain. Boliye Prabhu. LLBs can explain better. LLBs can explain better. Lord of the last bench. Boliye. Like some people feel satisfaction by giving donation. So they some get satisfied by like donation. One gives in the mind of like donating. Other gives it in the like he has that and he is giving out. That and he has that ego problem. So here it is mentioning a very important word I asked. Sarvan. Vihaya yad prajati yad kaman sarvan. सभी तरह के कामों को छोड़ना है भाई. काम मीन्स desires for sense gratification. You may say what you are saying is a subtle sense gratification. There are two types of sense gratification. One is a gross sense gratification, one is a subtle sense gratification. हम लोग एक छोड़ा नहीं, दूसरे पे अटक गए. What is the first gross sense gratification? मीटिंग, अच्छा खाओ. देन फॉर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ब्रेक करने में तो हम तो वेट करते रहते हैं कब ब्रेक करें हम. So that is one problem we felt that is also sense gratification. Meat eating, intoxication, illicit sex and gambling. Other than that, there is nice feeding your senses, feeding your body. This is the biggest form of drawback with respect to sense gratification. Sense gratification पे तो आप लोग खुद मुझे लेक्चर दे सकते हो, इतना तो मैं सुना चुका आप लोगों को. तो मैं क्या बताऊँ, शर्म आती है बोलने को. सभी आप लोग ही मुझे बता सकते हैं कि सेंस ग्रेटिफिकेशंस कितने तरह के होते हैं. उसका तो कोई अंत ही नहीं है. चाहे वो गाड़ी, बंगला, गाड़ी, name it, everything, in every aspect of our life we have brought in sense gratification. If it is not a gross sense gratification, it is definitely for sure a subtle sense gratification. वो क्या बोलेगा,
मुझे मेरे बारे में. If I don't wear this diamond necklace, if I don't wear this, I don't have a very costly mobile phone, if I don't have a costly car, if I don't have, a style of shosha, it's a gross, it's a subtle sense gratification. So we are stuck in between both gross as well as in subtle sense gratification. और कितने लोग आपके घर पे आए गणपति में, अरे अच्छा बोल के गए, हाँ ऐसा ही बोलेगा, नहीं बोला ऐसा क्यों नहीं बोला, मैंने इतना अच्छा किया, नहीं बोला. सो दिस इज ग्रॉस, सटल फॉर्म. ग्रॉस में तो ठीक है, स्थूल चीज़ है, लेकिन फॉर्म ऑफ थिंग्स इट मे बी टीवी, रेडियो, एसी, वॉट एवर यू कॉल इट, इट्स अ ग्रॉस थिंग. और सटल इज मोर डेंजरस एंड वी आर ऑलवेज स्टक इन सटल. सटल में हमारी आधी ज़िंदगी सटल में निकली. वो क्या सोचेगा उसमें ही हमारा पूरा जीवन अटक जाता है. सो दैट इज़ वाई ही इज़ यूजिंग द वर्ड. बट एक बात बताइए प्रभु जी, आपने तो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स भी छोड़ दिया, खांदा लहसुन भी छोड़ दिया, फॉलो किया, नॉट छोड़ा, फॉलो किया, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो किया, एंड चलो कांदा लहसुन भी छोड़ दिया, भगवान को भोग धरा के खा रहे हैं, सब कर रहे हैं, फिर क्या प्रॉब्लम? इज देयर एनी प्रॉब्लम लेफ्ट? यस, आप लोग कुछ तो हाँ बोलो. ऐसा मुंडी हिलाओ, तो ऐसा मुंडी हिलाओ, चुप बैठे रहोगे तो. एक्सपेक्टेशन फ्रॉम लॉर्ड, वेरी नाइस पॉइंट. समथिंग मोर. अच्छा, कितने लोगों के पास घर पे अर्च विग्रह है? अच्छा, विग्रह अर्च मतलब भगवान, डिटीज, फोटो नहीं. हाँ चलो, फोटो है, ठीक है. अच्छा, ऑल्टर में फोटोज तो है ना सबके? हाँ चलो, अच्छा ओके. एक बार है ना, एक बड़ा मीटिंग हुआ. इट वॉज वो सत्र बुलाते हैं ना, कॉन्फ्रेंस. तो एक बार एक कॉन्फ्रेंस आया. आई रिसीव्ड दिस नाइस मैसेज ऑन व्हाट्सएप. इट वॉज अ नाइस, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग इट विथ यू ऑल. तो सबके घर के भगवान को लेटर्स भेजा गया, बोला कि लेट्स हैव अ कॉन्फ्रेंस. तो व्हाट इज़ द टॉपिक ऑफ द कॉन्फ्रेंस, व्हाट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द कॉन्फ्रेंस? वी विल हैव टू फाइंड आउट कि हाउ यू ऑल आर एन्जॉइंग इन योर मास्टर्स प्लेस. यू आर द मास्टर बट स्टिल वी हैव टू कॉल. आप इनके घर पे हो तो आप इनके यजमान हुए, इनके घर पे हैं तो आप यजमान हैं. तो विल हैव अ नाइस मीटिंग. एंड उसके लिए चेयरमैन किसको बुलाया था? द्वारकाधीश को बुलाया था. द्वारकाधीश जी इज़ द चेयरमैन, द मेन हेड, एंड यमुना देवी इज़ अ बहन ना, कृष्ण की वाइफ हुई ना, तो यमा की वाइफ, तो उसको भी बुलाया था. तो यमुना देवी आई और द्वारकाधीश आए, एंड देन ऑल जितने जिसके घर पे फ़ोटो थे उनको भी इनविटेशन, जिनके घर पे लड्डू गोपाल है उनको भी इनविटेशन, जिनके घर पे राधा कृष्ण है उनको भी इनविटेशन, नरसिंह देव है उनको भी इनविटेशन, सबका घर भगवान को बुलाया गया. तो बोला भाई आप लोगों को कैसे चल रहा है? बोला तो पहले एक को पूछा गया कि आप तो वैष्णव घर में हो, वैष्णव के तरीके से सेवा हो रहा है, कैसे सेवा हो रहा है? बोला बहुत प्रेम से कर रहे हैं, इतना प्रेम से कर रहे हैं पूछो मत, बड़े प्रेम से कर रहे हैं. बट क्या है, उनके मन के हिसाब से कर रहे हैं, हमारे मन के हिसाब से. बोला क्या ऐसा क्या हो गया आपके साथ? सो इट वाज, एवरीवन वाज गिविंग देयर इनपुट्स. सो द फर्स्ट लॉर्ड सेड, सी द प्रॉब्लम इज माय हाउस पीपल, दे आर वेरी वेरी हेल्थ कॉन्शियस. दे आर वेरी वेरी हेल्थ कॉन्शियस. तो वो लोग ना बटर, ना घी, ना शक्कर, कुछ नहीं. बोलेंगे मीठा खीर खा लो, बोलेंगे खीर में शक्कर ही नहीं. क्या है वो, शुगर का सब्स्टिट्यूट जो आता है वो, स्टीविया डाल के वही बना के दे रहे हैं, वही खीर खाना पड़ रहा है, सूखी रोटी. दे आर हेल्थ कॉन्शियस. मैं भी हेल्थ कॉन्शियस हो गया उसकी वजह से. ठीक है, तो दूसरे को पूछा भाई आप कैसे हो? लड्डू गोपाल थे. अरे पूछो मत, मेरे घर वालों को है ना बहुत प्यार है मेरे ऊपर, बट इतना प्यार है कि उनको आदत है गरम गरम खाने का. हाँ, उनको आदत है गरम गरम खाने का. और उनके घर में उन्होंने एक सिस्टम भी बनाया कि बनाया हुआ खाने को वापस गरम नहीं करेंगे.
वापस गर्म नहीं, कई घर पे एक सिस्टम होता है कि वापस बनाया हुआ खाना को गर्म नहीं करना चाहिए, तो दैट वी विल ऑफर द लॉर्ड इमीडिएटली। तो मेरे सामने गर्मा गर्म पूरी और गर्मा गर्म सब्जी, गर्मा गर्म, एंड मेरे पास टाइम है सिर्फ 5 मिनट्स। मेरे पास टाइम है सिर्फ 5 मिनट्स, इतने में खाना कंप्लीट करना है मुझे, 5 मिनट में। कभी हाँ, वो तो बहुत स्टॉलवर्ड वैष्णव है ऐसे तो। अभी आएंगे उससे वैराइटीज़ आएंगे, डोंट वरी। आप किसके इसमें फिट होते हैं आप अपने आप को देख लेना आप लोग। तो गर्मा गर्म 5 मिनट्स में खाना पड़ता है। मैं भी फूंक मार मार के खा लेता हूँ, थोड़ा कभी मुंह जल जाता है तो कभी हाथ जल जाता है, खाना अच्छा ओके ओके, क्या करूँ, भाव से जो भी खिलाते खाना पड़ता है। बाद में प्लेट चला गया, कुछ मिलता नहीं है, शाम तक भूखा रहना पड़ता है। ठीक है, फिर तीसरा भगवान के पास गया, आपका क्या है? हाँ, मेरा तो क्या है, मेरा साथ तो थोड़ा प्रेम तो बहुत है मेरे यजमान का, बट द प्रॉब्लम इज़ वो रोज़ ही कैन नॉट अफोर्ड माखन, तो रोज़ एक केला लेते हैं, उसको स्मैश करते हैं, हाँ, उसको स्मैश करके उस पर 2 खड़ी साकर डाल के, भगवान प्रभु इसी को आप माखन समझ के खा लेना। बेचारा मैं इतना सालों से खा खा के माखन का स्वाद ही भूल गया। आई हैव फॉरगॉटन व्हाट इज़ द टेस्ट ऑफ बटर। तो ये हालत है मेरी। एक को पूछा गया, आपका क्या? मेरा तो ठीक है, मेरा मालिक बहुत अच्छा आदमी है, बट एक बार घर में झगड़ा हुआ, ऐसा झगड़ा हुआ मुझे घर के बाहर से निकाल दिया, मुझे घर के बाहर ही निकाल दिया। वो उनका अंदर का फाइट की वजह से मैं सोचा मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरे को घर निकाल दिया। बट फाइनली द लास्ट वन वॉज मोस्ट इंटरेस्टिंग। लास्ट वन पूछा, आपको कैसा लगा? मैं तो इसको अपना घर समझता हूँ और ये अपने परिवार के लोग समझता हूँ। दे कंसिडर मी एज अ मेंबर ऑफ द हाउस, सो आई ऑल्सो कंसिडर देम एज माई फैमिली मेंबर्स। But whenever they go out for shopping, they get everything for their wife and kids. I also, like a small child, like a small Laddu Gopal, I also go crawling to see if something they have got for me also. But they get for every child in the house, but they do not get for. How much we are engrossed in sense gratification. We keep the person in the house but without caring for him. Though he is the head of the family, we still has to beg, just because he is still begging, because he still considers you out of love as a house member. So those who are having deities in the house, vihaya kaman sarvan, prajati yat kaman sarvan, please leave this activity of sense gratification. And if at all you cannot leave it, add your Lord also in your activities of sense gratification. If you are buying some nice biscuit for your child, please buy something nice for the Lord also. If you are making some nice dish which your son or daughter likes, make sometimes something which the God also likes. Might be the house people may not like it, but at least it may not be calorie conscious, it may not be health conscious, but at least offer something to the Lord which the Lord also likes. हमेशा बनाना एकदम स्मैश करके भगवान इसी को माखन समझ के खा लो, तो भगवान भी बोलेगा आजा बेटा, तुझे मैं भी कभी सिखाऊंगा। So this is why we are so much engrossed in sense gratification that we forget that we are serving the Supreme Personality of Godhead who is sitting in our house. इतने महान व्यक्ति जो हमारे घर पे हैं, उनको केयर कहाँ करते हैं? How do we care? Where do we care? Really do we care for him? We just keep him okay, fine. एक तो मैं बोला ही नहीं, एक व्यक्ति ने बोला मेरा यजमान जो है ना, उसको मेरा श्रृंगार करने को बहुत पसंद है। अच्छा, बोला हाँ बढ़िया श्रृंगार करता है वो। क्या करूं, मेरा इतनी छोटी कलाइयाँ हैं, उसको इतना भारी भारी कला कंगन पहना देता है, एकदम वाली गले में इतना बड़ा, मेरा गर्दन भी झुक जाता है, इतना बड़ा हार पहना देता है।
So let's interact with God in a much better fashion instead of just doing it meticulously. ठीक है, करना है, सुबह उठ गया, ले खा, ले कपड़े पहन ले, जा. इट शुड नॉट बी दैट. जितने आप चाव से अपने घर के अपने बच्चों को आप संभालोगे, उनको इतने प्यार से खिलाओगे, इतने प्यार से उनके लिए रात को 2 बजे भी उठ के आप खाना बनाओगे, उसी प्यार और इससे करना है. I can, that's a big message. I can go on reading, like some people get up late, they don't care for me in the morning also, they are in a hurry to go, they don't cook, give any food. So various lords had got various reasons to not complain, but expect a better service from the Vaishnavas. So we just call ourselves Vaishnavas, but we will have to improve our quality of service towards the Lord. So let's coming back to our sloka. So first and foremost, a person who is in transcendence, he is free from all desires of sense gratification of all varieties, O son of Partha. And another thing is Managatan. What is the meaning of Managatan? Which are of mental concoction. आप ये सोच रहे हो कि भगवान को मैं ये गहना पहना दूं या एक ड्रेस पहना दूं. God also expects that you serve him well, but at the same time it should not be of your mental concoction. This mental concoction is, as I told you, मक्खन के जगह पे आपने केला खिला दिया, या आपके घर पे आज थोड़ा प्याज वाला सब्जी बने तो मज़ा आएगा. वो सब्जी जिसमें प्याज और लहसुन रहता है ना, उसमें टेस्ट अलग आता है. भगवान को खिला देंगे ना, 2-4 फ्रूट्स लेके आके, भगवान आपके लिए स्पेशल फ्रूट्स मंगाता हूँ, रुको, भगवान आपके लिए स्पेशल ड्राई फ्रूट्स मंगाता हूँ, भगवान आपके लिए स्पेशल हलवा बना देता हूँ. भगवान खाए हलवा और आप खाए पूरी, सब्जी, चटनी, अचार, ये वो 10 आइटम आप खाओ. वो तो प्रसाद है, सब लोग खाना ही प्रसाद है. वो तो उसको स्पेशल नाम देके, वो सब क्या है, पाप है. अगर ये प्रसाद है तो वो सब क्या है, पाप है. There has to be that love. What is love? What is surrender? Okay, let this verse stand this week. 1 minute. All of you all go to all of you all go to Chaitanya Charitamrita, Madhya Leela, 22nd chapter, verse number 100. प्रिया जरा मेरे को, आप उमा के पीछे एकदम स्क्रीन कवर के पीछे खड़े हैं ऐसे लग रहा है, आप दिख नहीं रहे. आप गूगल करोगे मिल जाएगा. C22 second Madhya Leela, first is you have to write is Madhya 2200. अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम, वो वाला वर्स. अच्छा, यहाँ पे कितने लोग शरणागत है भगवान के? कितने लोग हैं शरणागत हैं भगवान के? शरणागत कोई हाथ उठाने कोई तैयार नहीं है. हाँ हाँ, CC 2200. CC मध्य 22.100 ऐसा टाइप करिए. Because the word Sarvan Kaman can be understood only when you understand actual meaning of Sharanagati. 100.
22.100 मिला, सबको मिल गया? ओके। अनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूल्यस्य वर्जनम रक्षति इति विश्वासो गोतृप्ते वारणः आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति। दिस इज व्हाट इज कंप्लीट 6 फॉर्म्स ऑफ शरणागति। अगर ये 6 फॉर्म्स यू आर अडेप्टिंग इन योर लाइफ, देन यू आर अ सरेंडर्ड सोल। रेस्ट, हम तो प्रभु के दास हैं, हम तो सेवक हैं, दिस इज ऑल लिप टॉक। दिस इज जस्ट लिप टॉक। एक्चुअल प्रोसेस यू वांट शरणागत होना है तो कैसे होना है यहाँ कहता है। इट इज अनुकूल्य 6 divisions of surrender are acceptance of those things favorable for devotion and rejection of the unfavorable things, the conviction that Krishna will protect you, the acceptance of Lord as one's guardian or master, and full surrender, and last is humility. These are the 6 steps of saying. Just let's understand this one by one in the verse itself. अनुकूल्यस्य संकल्प, जो अनुकूल है भगवान के लिए वो एक्सेप्ट करना है। और वो क्या है? आपको सात्विक भोजन एक्सेप्ट करना है। और 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, वो तो आपको इंसान बनाता है। एंड एसोसिएशन ऑफ नॉन डिवोटीज शुड बी अवॉइडेड एज मच एज पॉसिबल। और दिन माता जी घर पे कोई आके प्रवचन देके गया, अभी इतना जल्दी नहीं होना चाहिए, आप लोग इतना भी तो खेलने कूदने के दिन हैं आपके, आप इतने जल्दी भक्ति में चले गए, अत्याचार हो रहा है आपके साथ, आपके बच्चों के साथ, थोड़ा बहुत मुझे भी कोस के गए रहेंगे थोड़ा तो हाँ ठीक है, हम तो खाने के लिए बैठे हैं तो ऐसे तो से पीपल विल कम एंड टेल यू बिकॉज दे देमसेल्व्स डोंट वांट टू डू शरणागति। वो लोग ये नहीं करना चाहिए, शरणागति करना नहीं चाहिए। दैट इज वाई इट्स क्लियरली राइट्स, चैतन्य धर्म में क्लियरली रिटन, अनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम। जो भगवान को ठीक नहीं है, कांदा लहसुन भगवान के लिए नहीं है, मत एक्सेप्ट करो। यू शुड रेडी टू लीव व्हाट लॉर्ड डजंट वांट, दैट शुड बी लेफ्ट एट एनी कॉस्ट। भगवान चाय नहीं पीते हैं, कॉफी नहीं पीते हैं, आपको भी छोड़ना पड़ेगा। कुछ लोग हैं छोड़ने के बाद भी लेते हैं वापस। और ऑलवेज आई से इट इज़ लाइक ईटिंग योर ओन वॉमिट। एक बार आपने चाय छोड़ दी है, एक बार आपने संकल्प करके कॉफ़ी छोड़ दिया है, एक बार आपने संकल्प करके नॉन वेज या कोई भी चीज़ छोड़ा हो, प्लीज बी ए मैन। नो एनिमल इन दिस वर्ल्ड एवर ईट्स इट्स ओन वॉमिट। और एक बार आपने छोड़ दिया मतलब यू हैव वॉमिटेड इट आउट, और उसको वापस लोगे आप, उसी वॉमिट को जाके वापस खाओगे। It's such a shameful thing. That's why one should always stand by his words. बोलते ना, प्राण जाए पर वचन ना जाए। अपना जबान का भी कोई कीमत होना चाहिए। एक बार you have decided, then don't let any other thought reverse you back. That is why अनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूल्यस्य वर्जनम रक्षति इति विश्वासो। मेरी रक्षा करेंगे ये आपको विश्वास होना चाहिए। देन यू आर अ सरेंडर्ड पर्सन। देन यू आर अ सरेंडर्ड पर्सन। इफ यू आर नॉट हैविंग द फेथ, नहीं मुझे ही करना है सब कुछ। इवन द्रौपदी ट्राइड, गजेंद्र ट्राइड, बट एवरीवन फेल्ड। बट व्हेन दे सरेंडर टू गॉड, अब जो भी हो गोविंदा करके उसने हाथ ऊपर किया, एंड कृष्णा ने साड़ी की फैक्ट्री खोल दी। अनलिमिटेड क्लोथ्स केम। When Gajendra, when he saw that कुछ हो नहीं रहा है, 10,000 1,000 साल से वो पानी के अंदर फंसा हुआ है, now what is to be done? He prayed to the Lord. अब तू जो भी करना है तुझे करना है। And Bhagavatam says very nicely how he came, how did Vishnu come? You know, it's like movies में दिखाते हैं ना, when you are on a fast bike, कैसे हवा के झोंके से आपके बाल उड़ रहे हैं, आपके कपड़े उड़ रहे हैं। Same way he is telling Garuda, come on, go fast. And it's described very nicely. His pitambar is flying. He is going at jet speed. He says, go, I have to go fast. And he didn't wait for Garuda to land. He didn't wait for Garuda to land, then to kill the crocodile. When he was in that hitting distance में आ गया ना, when you are on the range,
शॉर्ट रेंज में आ गया, immediately released the Sudarshan Chakra, immediately cut the head off. He had not even accepted the lotus from Gajendra's trunk. Gajendra had kept his lotus ready in the trunk. He took late बाद में पहला इसको खत्म करो. And he's coming at fiery speed. And he's coming so fast. And look at the way, 1,000 years he is fighting in a pond. Definitely no lotus can be there around. Then where did the lotus come? That immediately Gajendra was praying and he was looking here and there. अरे मैं क्या ऑफर करूं भगवान को, मेरे पास कुछ भी नहीं है ऑफर करने के लिए. That time Lakshmi Devi threw her own lotus down. She said, please take it. Whenever you want to serve God and you don't have the fund, don't worry, Krishna will make arrangement. Lakshmi Devi sees, oh, you want money for the service of the Lord. Immediately she gave his lotus. Her own lotus she threw down, which Gajendra caught and he gave it to, मतलब उसका ही माल उसको वापस दिया. कुछ भी स्पेशल नहीं निकाला. But still you have to understand, the minute a man desires to serve God, might be he may not have the capability at that moment, but don't worry, Krishna will make arrangement, or Lakshmi Devi will make arrangement. See, Krishna and Lakshmi, or Vishnu and Lakshmi can never be separated. Lakshmi is always there in the heart of Vishnu, in Srivatsaha. She is always there in the bosom. So it is always said that whenever a human being desires, immediately the service is done by Lakshmi Devi. So this is what is Rakshati iti Vishwaso. करेंगे, रक्षा करेंगे. एंड अगर कुछ बुरा हो रहा है तो भी चलेगा. इट इज़ नॉट बैड. अपने कर्म कट रहे हैं. यू कैनॉट फाइट एवरीथिंग ऑफ योर ओन. सम ऑफ योर ओन सफरिंग्स हैव योर ओन अर्निंग्स. किसी और का अकाउंट में से आपको ट्रांसफर नहीं किया. आपके खुद के कमाए हुए कर्म जो हैं उससे आप अपना तकलीफ उठा रहे हो. चाहे वो फिजिकल एलिमेंट हो, फाइनेंशियल एलिमेंट हो, कोई भी रिलेशन एलिमेंट हो, कुछ भी एलिमेंट हो, एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, इट इज ऑल अर्नड बाय यू, बाय योर ओन पास्ट कर्मास. बट माइंड यू, बी अवेयर, दिस बर्थ व्हाट यू आर डूइंग, यू आर क्रिएटिंग ए न्यू सेट ऑफ कर्मास फॉर योर नेक्स्ट लाइफ. दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड. रक्षति इति विश्वासो. गोतृप्ति वारणः. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गोतृप्ति वारणः? He is always there to guide you like a father, like a friend. He is always there to guide you. Provided he guided Arjuna at what terms and conditions? Shishyasya sadimam tvam prapannam. When he surrendered that, भैया I am your shishya, now you are my teacher. Fine. अब किधर मारना है, किधर नहीं मारना है, किसको मारना है, everything he planned. So Krishna will help you. Krishna will definitely help you, but not at your terms and conditions, but at his terms and conditions. You have to be surrendered. You can do your all activities. See, nowhere Krishna said, नहीं आप सब काम धंधा छोड़ के हरे कृष्णा भजन करते बैठो. कहीं नहीं बोला है. इनफैक्ट अर्जुना को बोला भाई उठ, तेरा काम कर, यू आर ए योद्धा, यू आर ए क्षत्रिय, फाइट, डू योर ड्यूटी, एंड एवरी एक्टिविटी यू डू, यू हैव टू एस्टैब्लिश योर धर्म. धर्म को एस्टैब्लिश करने के लिए एक्टिविटी करो, ना कि अधर्म को एस्टैब्लिश करने के लिए. सो वो तृप्ति वारणः. आत्मनिक्षेप कार्पण्य. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आत्मनिक्षेप? फुल सरेंडर. आत्मनिक्षेप मीन्स फुल सरेंडर. देयर इज नो पार्शियल सरेंडर. तो आपने को वी हैव टू नाउ गो टू द स्टेप ऑफ फुल सरेंडर. अभी हम लोग सब प्रभु जी आई एम सरेंडर्ड, बट देन दिस हैंड हैज टू गो अप फुल्ली, देन it has to be total surrender. Correct. Use your intelligence. I am not saying yes, भगवान देख लेंगे. There was a case, quote unquote, one person's wife fell very sick, totally sick, and his husband was approached by all the devotees, told him, it's a true fact I'm telling you. He was told, no, you take your wife to doctor. No, he will protect. मर गई. This is not Atmanikship. Sorry. This is fanatism. This is madness. This has happened, true case I am talking of. The lady died just because she didn't get medical aid, and the husband was saying, no, God will protect. I am devotee, I am chanting, she is chanting, this and that. Nonsense.
Please do faith, but you have to follow what are the protocols in this material world. You have to follow them. कोई आके बोलेगा नहीं अभी भगवान मेरे को डेथ सर्टिफिकेट देगा, अभी वो तो तेरे को डॉक्टर से लेना पड़ेगा ना डेथ सर्टिफिकेट, तब देगा, अदरवाइज यू कैन क्रिमेट ऑल्सो. So you don't be fanatic. What I'm trying to say is, don't get flown. This is a very hairline difference. Huh? It's a very hairline difference. But don't slip yourself in the fanatic mode. Always keep yourself as a devotee mode. But devotee means you are aware of your surroundings, what is happening at the in around your life or in the society. Be aware of it. Don't be like I'm. या तो पूरा जाओ जंगल में एक साधु बन के रहो, नो प्रॉब्लम. देन इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी. वो नहीं तुम यहाँ पे एक टांग वहाँ पे एक टांग नहीं चलेगा. इफ यू आर कीपिंग योर लेग हियर, स्टे प्रॉपरली एंड फॉलो द रूल्स. एंड लास्ट इज कार्पण्य, humble. Now what is humbleness? What is humbleness? Tell me. How would you be humble? Not getting elevated or disappointed when things go as per our. Very good. And why do generally people, I mean, okay, we all know the subtle meaning of humbleness. But my question is, if we see, it's said, in any line, be it be engineering, be it be medical or anywhere, fault finding is the main intelligence. एक बार आपने fault find out किया, diagnosis or fault finding. In case of engineering, it is a fault finding. Where is the fault? Then the remedy is on the shelf. You have to just give the remedy from the shelf and the problem is solved. So if you want to understand मेरा humbleness में क्या गड़बड़ है, what is the fault? What is the fault which is holding us away from humbleness? Yes. When we have any position, we should know that it is the mercy of the Lord. Very nice. One plate extra pressure for you. Perfect answer. Perfect answer. We are always elated with something which we possess. Be it be our car, be it be our opulence, be it our thing. That is the root cause of the problem. Please understand, a rich man like Cyrus Mistry, what did he carry with him? It was so saddening to see such a, I can say, rich industrialist or businessman. His body is being taken out from the car and kept on the road. That video had come on WhatsApp. His body was pulled out and kept on the road. Though they had covered the face by, making it blurred. 100 crores or 70,000 crores, whatever it is. I mean, there's a huge figure which came in the news that he had got so many crores. And that person is lying like a vegetable on the road. Then also we are not understanding. Oh, my money will save me, my car will save me, my position will save me. Nothing is going to save you. A person who understands this fact and lives his life, his life will automatically become humble. His attitude towards life will automatically make him humble. जब वो समझ जाता है कि हाँ भाई ये सब जो भी भौतिक चीज़ है ये सब नश्वर है, ये तो क्षण भंगुर है, दिस इज ऑल टेम्पररी. It's all temporary. At any moment we can not lose anything. If you only leave this body and go, that's it. Everything will be here only. Everything will be there only. Only the master of the thing will change. Now what has happened to that 70,000 crores? The master has changed. Things did not go anywhere. Only the master has changed. So today what you are a master of something, in a few years or at the end of your lifetime, someone else will be owning it or mastering it. Even if you donate it, someone else is going to master it. So anyhow, you won't be the master of that thing. A person who is in this thought process, कि भाई मुझे इन अपने चीज़ों पे जो भी मैंने लाइफ टाइम में किया है या कमाया है, नाम, इसमें नाम प्रतिष्ठा भी आ गई है. इट्स नॉट जस्ट मनी, नेम, फेम, रिकग्निशन, वॉट एवर यू हैव अर्न्ड, all that will have to be
लॉस्ट वन डे. अगर उस सेंस के साथ मनुष्य अगर अपना जीवन जीता है, एंड व्हाट आई एम सेइंग इज ऑल ट्रू फैक्ट. What I am trying, if anybody has got any point against this, can please welcome if the person can raise the question on that. But you have to understand कि ये सब चीज़ आज न कल सिचुएशन चेंज होगा. थिंग्स विल नॉट बी द सेम. एंड जब ये चीज़ होने वाला है, किस चीज़ का घमंड करो? ऑपोजिट ऑफ प्राइड इज हम्बलनेस. हम्बल मीन्स आई एम हैविंग इट. भगवान की कृपा है, जब तक है. जब भगवान चाहेंगे लेके जाना है तो ले लेंगे, जब देना है देंगे. दैट इज द बेस्ट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट रादर देन boasting over it. Generally we have got a habit is boasting, but don't boast over it. Everything what is there with you is very very temporary. You yourself are temporary. What to talk about those things? You yourself are temporary. कितना साल रहोगे? 60, 70, 80, 90. 90 के बाद घर वाले बोलेंगे ये कभी उठा ले इसको, उठा ले उसको, तकलीफ दे रहे हैं मुझे. तो what is the use? You are in a temporary state. Yes, bro. आपने प्रभु जी बोला ना कि whenever we feel that कुछ भी है वो it is because of God. It is a mercy. See, one should not think that I have got it, I have earned it. Yes. Correct. Yeah. But shouldn't we strive for a better lifestyle? There is no harm in striving. But even if that is achieved, your striving means the giver. There are two things. You may get, you may not get. Correct. Both, you are not the boss. In both cases, you are not the doer or you are not the entitled to this thing. That is all depending in the hands of the Lord. If you get it, it is His mercy. Even that can go in due course of time. And even if you get it, what has changed? You are going to eat the same 2 rotis, same dal chawal. Might be you will travel in a better standard of thing. You may have a chartered plane with you. You may have a chauffeur-driven limousine car. That's the most you will get. The epitome of a betterment, what you call. You may he had 70,000 crores, you may have 70 lakh crores. But what is going to do? What's going to change? Is going to change your day-to-day lifestyle? With respect to others, yes, it may be. We people are obsessed. Ambani is daily having 1 lakh का चाय. That's what I was given to understand. लाख रुपए का चाय पीता है. One time he has 1 lakh रुपए का चाय पीता है. I don't know. I don't want to argue on that. But who is envious or who is talk of the town? जो 10 रुपए का चाय पी रहे हो. वो 1 रुपए का चाय पीने दे, 1 लाख रुपए का चाय पीने तेरे को क्या लेना देना? What difference does it make? In what way? You are wasting your mind. You are applying your mind on something which is a big waste. अगर वो व्यक्ति वो 1 लाख रुपए का चाय का गांव का पंचायत करने से अच्छा है भगवान का एक गाना गा ले या भगवान का हरिनाम ले ले, वो उसके लिए फायदेमंद रहेगा. अरे वो उसका कर्म काट रहा है, तू कर्म का भोग रहा है, तू अपना कर्म का भोग रहा है. एक को खाने को नहीं मिलता, एक को खाने से परेशान है. तो व्हाट इज द डिफरेंस? Karmas, law of karma. Some people eat daily in a 5-star hotel. Some people go once in a month for a 5-star hotel. Some may crave, hey, kabhi chance milega. All segments are there in the entire society, right? But is that the focus? If you are getting a daily 5-star hotel, fine. But again, you should think it's temporary. That's why one who is connected with God, he has a better scope of understanding. Yes, He is my Lord. I have to serve Him. When one person has the Lord in his house and he is serving the Lord, then he is more grounded than a person who is not having the Lord in the house. Then he thinks he is the Lord of the house. वो खुद अपने आप को घर का भगवान समझने लगता. सब लोग मेरे आगे पीछे नाच रहे हैं. क्या नाच रहे हैं? आपके पास कुछ है, इसके लिए नाच रहे हैं. जिस दिन वो तत्व चला गया, आपके आगे पीछे कौन नाचने वाला? यू मे बी होल्डिंग सम मनी फ्रॉम प्रॉपर्टी. हाँ, मरने के बाद हर बेटा सोचता रहेगा मुझे कुछ मिलेगा, मुझे कुछ मिलेगा. इसके लिए नाच रहा है ना. बट रादर यू डेवलप दैट लव टू गॉड. दैट इज मच बेटर. That is why it is said
The 4 varnashram, what are the 4 ashrams? Brahmacharya, Grahastha, Vanaprastha and Sannyas. This is what everyone has to do. और जो उम्र में उसको खुद को वानप्रस्थ या संन्यास में जाना है वो आके आपको बोलता है मत करो ये सब बोलना प्रभु जी आप एक काम करो, हम छोड़ देते हैं, आप चले जाओ हमारी जगह पे क्लास को, उनको लेके आना है यहाँ पे. इसमें एक और लिखा है जो लास्ट में 6th है, meek and humble. हाँ मतलब वही दैट इज ह्यूमिलिटी. मीक इज हम्बल. मतलब मेरे पास मेरा धन नहीं है, ये भगवान का धन है, ये भगवान का सब कुछ है, ये सोचना है. कभी जयपुर यात्रा में लेके जाऊंगा तो समझाऊंगा आप लोगों को कैसे जयपुर के राजा ने उसको भगवान को अपना ये बनाया था और वो उनके भगवान के साथ बात करते थे. और एक दिन ऐसा हुआ, ऐसा सिचुएशन हुआ दैट ही स्टॉप्ड टॉकिंग टू. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड वंस इन द क्लास, आई विल टेल सम अदर टाइम व्हेन वी विल गो देयर, दैट टाइम 1-to-1 बात करेंगे. ओके, विल टेक वन मोर वर्स, नो प्रॉब्लम. 10 minutes more. So which one did I take right now? I have to take 50 55 हो गया, 56. So once again just let's preview this 55 once more. प्रजातीयत कामान सर्वान प्रात मनोगतः. आत्मन एव आत्मतुष्टः. नो, वी विल कंप्लीट दिस वर्स. अभी तक ये लास्ट 2 लाइन्स इसका बाकी है, सॉरी. आत्म एव आत्मतुष्टः स्थित प्रज्ञ तद उच्यते. आत्मनि एव आत्मतुष्टः. What does this mean? Atma eva atmatushta. Can anyone explain? Okay, let's go to the word-to-word translation so that it becomes easier for you to understand. Atmani, in the pure state of the soul, eva, certainly, Atma, by the purified mind, tushtaha, satisfied. Ab, what do you understand from this? Yes. जब मैं पूछता हूँ सब लोग मुंडी नीचे तभी पढ़ने लगते हैं. हाँ बोलो. माता जी परपट में ढूंढ रही है, कुछ समझ में आएगा क्या? आत्मा में संतोष प्राप्त करता है. हाँ, तो मैं वही समझने की कोशिश कर रही हूँ. यस. जो मिलता है उसी में खुश रहता है. See, people generally have targets. This year our sales target was, let's say, 5 crores, example. Next year our sales target has to be 7 crores or 10 crores, then 15, then 20, 25. और उसको अचीव करने के लिए जीवन भर is an agony. Atma atmastushta, one who is in satisfied, whatever comes by his own accord, you have to put your efforts. But you cannot say, if Arjuna said, I want to finish the war in 2 days. Not possible. जितना दिन 18 दिन हुआ, कृष्ण ने 18 दिन लिया, वो बात अलग है. बट वो शायद 25 दिन भी ले सकते थे या 5 दिन भी ले सकते. दैट इज लेफ्ट टू हिम. इट इज़ नॉट इन योर हैंड्स. ही कुड नॉट डिसाइड, नहीं मैं 2 दिन में और ख़त्म कर दूंगा. ऐसा करता तो पहले दिन ही करने का था. विराट युद्ध में एक ही दिन में, एक ही 4 घंटे में ही डिफीटेड द एंटायर कौरव आर्मी. सेम वन अर्जुना, वन अकेला अर्जुना. यहाँ इतनी अक्षौणी सेना है, भीम है, युधिष्ठिर है, नकुल है, सहदेव है, घटोत्कच है, सब so many warriors were there. But he could not finish in 1 day. He took 18 days. And that too, he has to lose his children. He has to lose so many of his own kingsmen, party people he had to lose. So, please understand one thing. संकल्प ऐसा करने नहीं होना चाहिए. संकल्प आपका सही होना चाहिए. If the sankalp is good, then everything is good. If the sankalp itself is not correct, everything goes in the wrong direction. So please understand, Atma, we should be satisfied. Satisfaction in one's own self is the biggest challenge we all face. We are none of, you ask a small kid over there, are you satisfied? You ask elderly persons, 3 elderly people are there, 70 people, 78 and 68 and 78. Are you satisfied? But when Srila Prabhupada was in his deathbed and his students asked him, are you satisfied? You have anything in desire? He said, I have no desire.
that person can leave the body in a perfect transcendental state. That is why he said that it's said to be in pure transcendental consciousness. What does this mean? Who has no desires. Your desires are the root cause of your sadness. Two possibility: desire will get fulfilled, desire may not get fulfilled. If it gets fulfilled, it gives rise to new desires, and if it is not fulfilled, it leads to anger, frustration, and finally a person may even go to an extent of committing suicide. Depression is common. आजकल depression is a very common thing. And what is depression? मेरा मन का नहीं हुआ. That's simple, ना? मेरा मन का नहीं हुआ is depression. And उसको पूरा दुनिया फिर void लगता है, उसको पूरा दुनिया. What is void in this? What do you get void in it? मेरा मन का नहीं हुआ. मुझे मेरा फलाना कॉलेज में नहीं मिला, ये हो गया, पति ने सही बिहेव नहीं किया, पत्नी ने सही बिहेव किया. अरे बाबा, इस दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं है. You yourself are not perfect. This world is an imperfect place. You are imperfect and you are expecting perfection. You are the biggest fool in this world. If someone who is in this world, which is an imperfect world, and you are expecting perfect, every husband thinks wife should be perfect. Every wife thinks husband should be perfect. How can you be perfect? Both are manufactured by imperfect people in this imperfect world, and you are expecting perfection. How is it possible? It's not possible. And these type of desires, what you said, these types of desires are the root cause of happiness or sadness. ज़्यादा करके आपका desires fulfill नहीं होता. You may think, I should have a wife like Aishwarya Rai. If you don't get a wife like Aishwarya, now what you'll do? क्या? हाँ प्रभु जी. Why desire? When Kardam Muni desired to get married, what is the first thing he did? He didn't go to a beauty parlor. He didn't hit the gym. Six ab banata hu. I'll attract the thing. Neither he put all those perfumes, which attracts the opposite sex. I never knew perfumes can be used to attract the opposite sex. All the ads which they show on TV. So finally, none of the things he did. He just did tapasya. Rest. Neither he went to the gym, neither he bought branded clothes, neither he go to the beauty parlor, nicely coloring his hair and all that. तो कुछ भी नहीं किया. ना ही कोई व्रत रखा. सिर्फ since Manu said, okay, you have to produce children, what he did? कब चुप गया, तपस्या किया. तपस्या किया तो भगवान सामने से आए. बोला हाँ, I know what is your desire. Don't worry. Tomorrow Manu will come with his daughter, Devuti. Accept her as your wife. यहाँ तक वर्ड बोला, नाटक मत करना. Don't show up because I know what your desire is and I am sending them. God sent her and Devuti came and she turned out to be a very good wife. The problem is we are trying to do it all by our own intelligence and with our own powers. But the problem is we don't accept there is a superior person who can do it. But time लगता है ना. हम तो डाउनलोड करने का आदत है. नेट क्या वो फ्लिपकार्ट एंड अमेज़ोन से मंगाने का आदत है. अब भी रात को 12 बजे भी ऑनलाइन ऑर्डर करो, यू कैन गेट इट. सो उतने में कौन करदम मुनि जैसा तपस्या करेगा? बट देन दैट्स द डिफरेंस. अ पर्सन हु इज सैटिस्फाइड, ओके, वॉट एवर गॉड यू हैव गिवन मी, आई एम हैप्पी, आई एम सैटिस्फाइड. Be with that attitude, you will live much more happier and more safe. Rather than you will live a satisfied life till the end. Because desires is a part of Maya. Maya plays its role very nicely. At every point it will check you. What is your next desire? It will offer you. Maya offers you. It gives you a chance. Next kuch aur karo. But it's left to you what to decide, what not to decide. So, just when the mind is purified, and then when his mind, thus purified, attains satisfaction in the self alone. See, please understand one thing. This is the byproduct of what he does on the first step.
one who gives up all his vihaya parajati sarva kaman, he gives up all his varieties of sense gratification, and thus his mind is purified. Then he comes to this stage. So the first stage if you do, then the second stage you can achieve. You cannot achieve the second stage first and the first stage like नहीं प्रभु मैं पहले satisfied हो जाता हूँ, बाद में मैं सब कामान छोड़ता हूँ. नहीं, it's not possible. When this happens, this gradually happens. That's why Lord is very clear and saying in the verse, Vrajati yat kaman sarvan partha manogataha atmani eva atmatushtaha. He is satisfied. Atma eva atmatushtaha sthita pragya tad uchyate. Next verse is the famous verse which was told by the movie. नहीं ओ माय गॉड में दिखेशु अनुविगत मना सुखेशु विगत स्वर वीतराग भय क्रोध सिद्ध धर्मुनि उच्यते. बड़ा डायलॉग है. Everyone clapped, but nobody understood the meaning. So if you want to understand the meaning, come next Sunday, we'll understand the meaning. Okay, Hare Krishna. With this, we like to close today's class. Anybody has got any doubts, questions, can answer. कौन से मुनि की कहानी बताई आपने? Karda Muni. के